Now we are coming to the concept of inverse trigonometric function. So you know that the trigonometry function, there are 6 trigonometry functions. You can see that sine theta, cos theta, tan theta, cosecant and cotangent. इसके बारे में we have studied in the last year. 6 trigonometric functions, correct? So उसका डोमेन हमने देखा था, साइन का डोमेन था all real numbers, and we know that साइन का ग्राफ -1 के and 1 के बीच में था. So there we know the range is set of all real numbers between -1 and 1. साइन का डोमेन all real numbers था, cos का डोमेन all real numbers, आउटपुट आ रहा था set of all real numbers between -1 and 1. याद है? Just refreshing your mind. tan theta आपको पता था, tan theta is sin theta divided by cos theta. So जब cos theta 0 होते हैं, मैंने आपको बोला था it is odd multiples of pi by 2 में, odd multiples of pi by 2, cos theta is 0. So जब cos theta 0 होगा, the function is not defined. That is why tan theta का domain all real numbers except odd multiples of pi by 2. Understood? Similarly, secant theta is same. Secant theta is a reciprocal of cos theta. जब cos theta is equal to 0 होगा, it is not defined. That is why sec theta का domain set of all real numbers other than odd multiples of pi by 2. Similarly, cosecant and cotangent. Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. जो sin theta 0 होगा, denominator 0 होगा when theta is equal to multiple of pi. Similarly, cotangent theta is equal to cos theta by sin theta. That is why जब cosecant theta and cotangent theta के लिए domain होगा all real numbers other than multiples of pi. Okay. Then sin theta का output, it is all real numbers between -1 and 1. I will show you again. Cos theta का output all real numbers between -1 and 1. Sec theta is a reciprocal of sin. Cosecant is a reciprocal of, sec is a reciprocal of cos. Cosecant is a reciprocal of sin. So क्या reciprocal, जब -1 and 1 के बीच में जो numbers का reciprocal देगा, आपको either 1 मिलेगा और 1 से ज़्यादा मिलेगा, और -1 मिलेगा और -1 से less मिलेगा. That is why their outputs are -infinity to -1 union 1 to infinity. And tan theta and cotangent theta का outputs are all real numbers. So this is what we have seen already. Okay. And period इसलिए बोल रहे हैं कि साइन एंड कॉस का वैल्यू, साइन कॉस कोसिकेंट इन चारों का वैल्यू 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा था. So that is why it's periodic with period 2 pi. Tan and cotangent का वैल्यूज पाई यूनिट, पाई मतलब 180 डिग्री के बाद फिर से 180 डिग्री के गैप के बाद फिर से रिपीट होते हैं. So that is why tangent and cotangent are periodic with period pi. Okay. You understood? ये तो आपने लास्ट ईयर जो पढ़ाई किया था. देखो sin x का ग्राफ देखो. Can you see? Look at the graph of sin x. This is a graph of sin x we have seen, right? Can you see my graph? Can you see the screen? Yes, sir. Can you see Yes, the sir. screen? Yeah. Look at that. Yeah. It's, look at that. वैल्यूज देखो पाई बाई 2 में 1 आ रहे, इधर -1 आ रहा है. देखो सो इस क्या हो रहा है कि -1 and 1 के बीच में द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस इन्फिनिटली ऑन बोथ डायरेक्शंस. यू कैन सी दैट every point in every point the function exists. फंक्शन का वैल्यू है, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है x को ये पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो साइन का वैल्यू नहीं मिलेगा.
So every point the value is there. And you can see that always the maximum value 1 आ रहे, minimum value -1 आ रहे. So हमेशा it is between -1 and 1. So that is why the domain of sin x, it is set of all real numbers, and domain of range of sin x is set of all real numbers between -1 and 1. See, I will one more graph इसके साथ करेंगे. 1 by sin, or it is cosecant x. It is cosecant एक साथ में ड्रॉ करेंगे तो समझ आएगा. देखो, the blue one, that's a graph of cosecant x. That's a reciprocal of sine. Right? देखो इधर these points where you can see when sin x is equal to 0, that means ये particular point में देखो -3 pi में sin x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब cosecant x का वैल्यू does not exist. Similarly, जब -4 पे देखो -4 pi में sin x का वैल्यू 0, देख रहे हैं ना? Yes, sir. दैट टाइम, और इधर आप देखेंगे तो 0 में sin x का वैल्यू 0, दैट टाइम cosecant x, यू कैन सी दैट ऊपर देखेंगे तो इट इज गोइंग लाइक असिम्प्टोट, इट नेवर टचिंग द लाइन. आपको अभी दिखेगा टच करेगा करके मन में आएगा, बट इट इज नॉट टचिंग, बिकॉज ऐसे मैं जूम करेंगे देखो अभी टच नहीं हो रहे. आया समझ में? सो कोसिकन का डोमेन होगा all real numbers except the point where sin x is equal to 0. उसका रेंज देखो, आउटपुट क्या क्या मिल रहे, तो देखो -1 मिल रहे, देन -1 से सॉरी 1 मिल रहे, देन 1 से एबो सभी रियल नंबर्स मिल रहे, और इधर -1 मिल रहे, -1 से बिलो सभी रियल नंबर्स मिल रहे. सो दैट इज वाई कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट एक्स का डोमेन all real numbers except the values where sin x is equal to 0. That means except odd multiples of pi. And range आएगा all real numbers except numbers between -1 and -1 के बीच में. -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, बट -1 and 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेगा cos x कोसिकेंट x को. आइदर -1 से लेस होगा, -1 और -1 से लेस, और 1 और 1 से ज्यादा. ठीक है? सिमिलरली इधर cos x का देखो, cos x देखो, cos x का ग्राफ सेम एज दैट ऑफ sin x. पीरियोडिक मतलब आप देख सकते हैं 0 से शुरू किया, देन 0 से शुरू करके 0 से 1 था, देन वापस इधर आ गया 2 pi से फिर से 1, देन अगेन 2 pi 1, देन अगेन इधर 4 pi में 1. यू कैन सी दैट वन कंप्लीट रोटेशन. सो 2 pi यूनिट्स के बाद फिर से वैल्यू रिपीट हो रहे, दैट प्रोसेस इज अगेन गोइंग ऑन अगेन द सेम थिंग. सो दैट इज व्हाई sin x cos x दे आर नोन एज पीरियोडिक विद पीरियड pi 2 pi. सो ये भी देखो, इसका भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हर रियल नंबर्स के लिए एक्सेस कर रहे, एंड इट्स वैल्यूज आर लाइज बिटवीन -1 and 1. नाउ इसका रेसिप्रोकल सीक सेम एज दैट ऑफ साइन. जो जगह cos x 0 हो रहे उस जगह secant x does not exist. Okay, so here secant x का डोमेन होगा all real numbers where cos x is except where cos x is 0. एंड रेंज देखो, -1 का रेसिप्रोकल 1 मिलेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1 मिलेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 मिलेगा, और आपको 1 और 1 से वो नंबर्स मिलेगा, और -1 और -1 से बिलो वैल्यूज मिलेगा. ओके, सिमिलरली फॉर tan x देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x. यू कैन सी दैट देखो
0 means 0. You can see after pi. This graph we already discussed earlier, but just for your information, after pi units, the graph is again repeating. That is why it is known as periodic with period pi. Then इसका डोमेन देखो, ऑल रियल नंबर डोमेन मतलब जैसे tan x जब ये 0 होगा, जैसे sin x by cos x. सो cos x जब 0 होते उस पॉइंट में tan x इज नॉट डिफाइंड, दैट इज वे असिम्प्टोट्स जा रहे हैं देखो. ओके, देन इसका रेसिप्रोकल आएगा cot tangent x. Red one is the graph of cotangent x. There also you can see that output you are getting all real numbers. Okay, so that's all about, this is the thing what we have discussed in the last year. Sin x means all 6 trigonometric function and their what we say, their domain and range. So next class tomorrow